सो नमस्ते दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी फेसबुक लाइव पे है। PMJKY PPA प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान से। मेरा नाम खुशहाल जैन है। हमारे साथ है चंद्रशेखर जी, राजेश राउत जी और अमिता रानी पांडे जी है जो स्टेट की प्रेसिडेंट है। तो हम लोग अभी इनवाइट एक मिनट के अंदर हम लोग लाइव होंगे, ठीक है। तब तक आप जहाँ पे भी फेसबुक आप देख रहे हो, ठीक है, उस लिंक को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए या फिर दूसरे ग्रुप में शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचे, ठीक है। तब तक मैं आपको लाइव होते हैं हम लोग, तब तक आप शेयर करते रहिए। So I request everyone to share this link of Facebook in all the other groups, in your friend circle. You can tag them along so that they can also view this Facebook live. So I welcome on behalf of everyone, on behalf of PMJKY PPA, that is Pradhan Mantri Jan Kalyankari Yojana Prachar Prasar Abhiyan. So we are going live, Facebook live. This we have been doing every week on week, sharing one scheme every week in detail. So this month our theme is about agriculture and we are going to share a little bit about it. So before that, let me invite our Amita Rani Pandeji, who is the president of Karnataka State. Let me invite her. She'll share a little bit brief about the PMJKY PPA, and then we'll get go into the more information on the scheme. So over to Amita Rani Pandeji. नमस्ते दोस्तों, ಎಲ್ಲರಿಗೂ नमस्कार। ये मैं प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान 4062 के कर्नाटका विभाग से बोल रही हूँ। हमारे कर्नाटका में ये 3 बहुत ही यशस्वी ट्रेनर्स हमारे पास हैं। कुशाल जी हमारे स्टेट के ट्रेनिंग अध्यक्ष हैं और राजेश राउत जी और चंद्रशेखर जी उनके सहयोगी हैं। ये तीनों बहुत ही यशस्वी हैं और इन्होंने अब सारी स्कीमों के बारे में काफी अध्ययन किया है और ये अपने अध्ययन से सारे लोगों को वो डिटेल में बताना चाहते हैं कि ये स्कीम्स किस तरह से कार्य करती है। मेरा आप सबों से सनिम्र निवेदन है कि आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस प्रोग्राम को देखें और इसको सफल बनाएं। ये नॉलेज खाली आप तक ही नहीं रहेगा, आप तो एक जरिया बनेंगे कि कितने लोगों को आप फायदा दिला सकते हैं। आज इस टीम ने इस प्रोग्राम के अंतर्गत किसानों से अभी पूरा भारत जो है किसानों को लेकर के सारी सरकार और सारे लोग उस पर चिंतित हैं। तो आज हमारा जो विषय है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, इसके विषय में इनकी टीम पूरी बात करेगी। तो इन्होंने कितना सुंदर से ये प्रोग्राम को बनाया है। आप देखें कि इन्होंने 3 भाषाओं में इसको साइमल्टेनियसली इसको टेलीकास्ट करेंगे। तो क्या होगा किससे कि कितने सारे ऑडियंस, क्योंकि हम ये फेसबुक लाइव जो है ऑल इंडिया वाइड कर रहे हैं, तो पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार हो रहा है और हमारे सारे सबसे ज्यादा इसमें फोकस हम अपने कार्यकर्ताओं को कर रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं के पास में जानकारियों की थोड़ी सी डिटेल जानकारियों की कमी है कि इन स्कीमों को किस तरह से उपयोग में लाया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने डिजाइन किया कि कुशाल जी इंग्लिश में बोलेंगे, राजेश जी हिंदी में बोलेंगे और चंद्रशेखर जी कन्नड़ा में बोलेंगे। तो आप देखिए हम पूरे भारत को किस तरह से एक छोटे से प्रोग्राम के अंदर सीमित कर दिए हैं। तो आप लोग इसका लाभ उठाएं और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को फिर से धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। कुशाल जी, राजेश जी और चंद्रशेखर जी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी मेहनत करने के लिए और सभी के सामने इंफॉर्मेशन को बहुत सरल भाषा में लेके आने के लिए। तो अब आपको डिटेल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किस तरह से लाभान्वित आप किसानों को कर सकते हैं, ये डिटेल आप कुशाल जी से सुने। मैं कुशाल जी को ये मंच देती हूँ। आप सबों का फिर से धन्यवाद इससे जुड़ने के लिए और इसमें आप जुड़े रहें और हर शुक्रवार को ये प्रोग्राम होता है तो आप और लोगों को ये बताते जाए, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम हमारे कार्यकर्ता जो है 500,000 व्यू तो होने चाहिए। उसके बाद फिर इसको हम ज्यादा जितना लाइक कर सकते हैं उतना लाइक कीजिए और अपने सारे नेटवर्क्स में जितने भी सोशल कॉन्टेक्ट है सब में इसको फैलाइए। धन्यवाद। थैंक यू अमिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आई। और सो लेट मी थैंक अमिता रानी पांडे जी, द प्रेसिडेंट ऑफ PMJKY PPA Karnataka State, and now we are going to share little bit brief about our profile and then we are going to share more about the scheme. Today's scheme is Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi.
So what is the scheme, how it's eligible, how it's beneficial. Now maybe you may not be a farmer, but why we are sharing this scheme is so that you are the ambassador for us. You are the medium who can go and share all these schemes and information to the in the villages and the friend circles who are farmers. So we want this information to pass on through you. So you are the medium for us. You are the ambassador for us. So be on Facebook Live, understand about this scheme, and then see how you can share this information to the relevant people who can get most beneficial. Okay, so that is the reason why we are coming week on week with different schemes, different themes, so that everyone can understand and take to their life and get benefited. Okay, so I'll invite, we have a team, Chandrasekhar Raut, Chandrasekhar, who is our associate trainer from PMJKY PPA, and then we have Rajesh Raut, who is our associate trainer from PMJKY PPA. So we invite both of you to share the details as well, and let's start with our slideshow. So where Chandrasekhar will be playing the slideshow. Yeah. Okay, so let's next slide, please. Yeah. So today's theme is introduction to Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. What is this Yojana? So we are going to share more details on this, how a farmer can get more benefited, and because this is the almost, we can say, around 70 to 80% of our country is agriculture, right? So how this major chunk of people can get beneficial. So we are going to share more in detail in the scheme. So next slide. So my name is Kushal Jain. So my profile is I'm a serial entrepreneur and fast track startup specialist, founder and CEO of Amplify Mastermind LLP. And then we are founder also for Startup Success Hub, having 25 plus years of experience in entrepreneurship, recipient of 2 International Hall of Fame awards, organized training sessions for 10,000 plus startups and entrepreneurs around India. And I also manage a tribe of entrepreneur global network of 30,000 plus members. And I'm in a mission to help 100,000 dreamers to launch their successful and sustainable startup by 2025. So let me invite Rajesh Raut to share his introduction. नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश राउत हूँ, स्टेट एसोसिएट ट्रेनर कर्नाटका के लिए। मैं IIM अहमदाबाद की गलियों से गुजरा हुआ हूँ, MDP कोर्स किया है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स, और मैं ट्रेनिंग में भी एक डिग्री होल्ड करता हूँ जिसमें मैं ट्रेनिंग दे सकूं, और आज आपके समक्ष हूँ उसी के नाते। मेरा मेन ग्रेजुएशन जो हुआ था वो इंग्लिश लिटरेचर में हुआ था, हालांकि मैं बात आज हिंदी में करूंगा। 22 साल की लंबी मेरी अभिज्ञता है, काम किया है, ज्यादातर HR और ट्रेनिंग, टैलेंट मैनेजमेंट में मेरा स्पेसिफिकेशन रहा है, और मेरा मकसद है कि मैं लाख से ज्यादा छात्रों को ट्रेन करूं, उनके जिंदगी में अच्छा बदलाव, सक्सेसफुल उनका जिंदगी बनाऊं, ये मेरा मकसद है। ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತ. ನಾನು ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿನಲ್ಲಿ MS ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ 1990ನೇ ಇಸ್ವಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಪಾಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. 30 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಹೆಡ್ ವರ್ಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಗುರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ.
So today we are going to speak about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi in detail. So next slide. So let me invite Rajesh Rao to share. Chandrasekhar, you can start with. Yeah. Shall I? Yeah, sure. नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से ही पता चलता है कि ये सम्मान मतलब इज्जत किसानों के लिए दिया जाने वाला एक प्रोग्राम है, एक योजना है। इससे पहले किसानों का हर जगह मान रहा है, लेकिन ये सम्मान है। ये सम्मान क्यों है? केंद्र सरकार ने सोचा कि किसान को हर साल 6,000 रुपया देंगे, मिनिमम सपोर्ट देंगे 6,000 रुपया, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, उनसे बिना कुछ चाहे अपनी तरफ से 6,000 रुपया देंगे। ये अब तक 6 बार दिया जा चुका है, यानी कि 2018 दिसंबर से चालू हो चुका है और आने वाले दिनों में ये 7वां दिया जाएगा। यानी कि अभी तक हर किसान 14 करोड़ 50 लाख किसानों ने 12,000 रुपए, एक किसान ने 12,000 रुपए अपने बैंक खाते में देख लिया है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, हकीकत में हुआ है। और जैसा कि हम जानते हैं, पैसा हाथ का महल है और आते ही निकल जाता है, पता नहीं चलता। और ये जो 6,000 रुपया है, एक साथ नहीं आता है, टुकड़ों में आता है, 3 किस्तों में आता है, 2-2 हजार के 3 किस्तों में आता है। और अभी तक ये 6 बार आ चुका है और सीधे बैंक अकाउंट में आता है, हमारे किसान भाइयों के बैंक अकाउंट में आता है। और आगे हम और भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना है कि ये केंद्र सरकार द्वारा ऐसा प्रोग्राम है जिसमें किसान भाइयों को सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है और ये किस्तों में दिया जाता है। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೂಂಜಿ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನದ ನಿಧಿ ಒಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. ಆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆದಾಯ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2018 ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು 2 ವರ್ಷನೂ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಂದಾಯಿಸಿರ್ತಾರೋ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಸೇರಿದೆ. ಇದು 6,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮೂರು ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖಾತೆಗೆ ಹೋಗೋಂಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರುವಂತ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. Okay, so let me share about what is Pradhan Mantri Kisan Samman Yojana. It is one of the initiative by central government of India in where all the farmers would get benefited up to 6,000 rupees as per minimum income support, because we see a lot of farmers has challenges in terms of managing themselves. So this has been designed a program since December 2018, and they give you in 3 equal installment. Okay, already in from December 2018 till date, already 6 installment has already been released. Okay, so that's what it means is like every installment comes in 2,000 rupees. So it is an income which benefits to them and it goes directly to their bank account. So we'll be going to share a little bit more in the next slide as well. Yeah. जी हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य है बहुत ही निम्न वर्ग के मार्जिनल जो किसान हैं, जिनके पास बहुत ही खेत कम है, ज्यादा वो जमींदार नहीं है, बहुत बड़ा खेत नहीं है, और उन किसानों को ये केंद्रित किया गया है। जो छोटे किसान है, जितना भी कम जमीन जिसके पास हो सकता है, अगर सोच सकते हैं, उनके मान लीजिए उसके पास 10,000 स्क्वायर फीट का भी अगर जमीन है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है, वो भी इसमें शामिल हैं, उनको ये दिया जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि उनको पैसा दिया जाता है ताकि वो इसमें अपना
गुजारा करें, उनको इसलिए दिया जाता है कि किसान के काम में जो जो खर्च होगा, यानी कि कुछ दवाइयाँ खरीदनी पड़ेंगी, कुछ बीज खरीदने पड़ेंगे, खेती के लिए जो जो चीजें चाहिए, सरकार को पता है 2000 के भीतर वो आ जाएगा, उसको वो अगर उसमें डालेंगे तो वो और फसल ज्यादा होगा, जिसके लिए वो किसी साहूकार के पास ना जाएं, किसी से उधार ना लें और उसको ज्यादा इंटरेस्ट ना पे करें। इसी चक्कर में कई किसान भाई हमारे अब तक फंसते जा रहे थे। इस बात को ध्यान में रख के सरकार ने एक योजना बनाई कि 2-2 हजार ही सही, साल में 3 बार ही सही, हम कुछ-कुछ करके राशि हमारे किसान भाइयों को देंगे। वो इसमें निर्धारित करेंगे कि कहाँ पे बीज खरीदना है, कहाँ पे एक्स्ट्रा लेबर कहाँ पे एम्प्लॉय करना है, कहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड डालना है, इंसेक्टिसाइड डालना है, कीटाणु मारने की जो पद्धति है, और कहाँ पे अगर पानी की जरूरत है, ये सब करेंगे तो इनको किसी साहूकार के पास या किसी से इंटरेस्ट में पैसे लाने की जरूरत नहीं है। इस उद्देश्य को मन में रख के ये योजना बनाई गई है। ಈ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಇಡೀ ದೇಶದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನದಾತ ಆಗಿರೋದು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಬಾಂಧವನಿಂದಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿರೋದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಣ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಕೆಲವು ರೈತರು 3 ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ, 2 ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಕ್ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ದುಡ್ಡಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಶೇಖರಣೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗೆ ಅವರು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೆಲವರು ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ತೊಂದರೆ ತಾಪತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಗಮನಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಕೃಷಿಕನಿಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 3 ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲೂ ಅವನು ತನ್ನ ಬೆಳೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅವನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನವಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಈ ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ನೀಡಿ ಅವರು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಪ್ಪ, 2022ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕನ ಆಮದನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿಕನ ಬರೋಂತ ಇದು ಈಗ ಬರ್ತಿರೋಂತ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಲಾಭ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, so let me share a little bit about objective of the Kisan Samman Nidhi. So this is actually been done in terms to support the income of small and marginal farmers. So majorly what happens is, in a time of need, that is financial need, either they have to go take a loan or go and take from the lenders at a higher rate of interest, and they might need to buy, whether maybe for a pesticide, maybe for the small seeds. So small requirement would be there for them in terms of farming, right? So this is why the design has been done such a way that they can procure those required seeds and the pesticides with the small amount to get a better yield over a period of time, and thus the amount comes in the installment, so it can be utilized based on that. And it is also helps in terms of whatever the small expenses are there, in terms of even some cases they might need to pay some amount to the workers and all
So it also can be used for that, or it can be for their own family purpose, because they would have already, as a farmer, they would have already invested so much money in seeds, pesticides, and for yielding purpose, they would have hired some workers. So this small amount can also help them in terms of getting a little support, financial support from the government. That is the reason why this has been created, Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi. Yeah, next slide. जी हाँ, अब जानते हैं कि क्या क्या खूबियां होनी चाहिए किसी में इस योजना का फायदा उठाने के लिए, जिसको अंग्रेजी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताते हैं। आपके पास जितना भी कम हो सके जमीन हो, यानी कि आप उसके मालिक हो, आप किसी और के लिए काम ना कर रहे हो, आप उसके मालिक हो। और सोशल क्लासिफिकेशन, आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हो, ये जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है, केवल ये कैटेगरी इसमें फायदा उठा सकते हैं। Slide has to move back. Yeah. हाँ, देखा गया खेती के बारे में जब भी बात होती है, थोड़ा सा तो उतार चढ़ाव रहता है। कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी धूप ज्यादा हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा जाता है, जैसे आज हमारे स्लाइड के साथ थोड़ा सा हुआ और अभी भी हो रहा है। अभी पूरा एकदम नहीं, अभी भी मौसम ठीक नहीं है, थोड़ा सा मौसम सुधारना पड़ेगा। जी हाँ, अभी हम बिल्कुल एलिजिबल हैं। राजेश भाई ये सभी को है, इंक्लूडिंग SC ST, इंक्लूडिंग SC ST, सभी किसानों को है ये। हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा, ये सभी नागरिक को है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, 14 करोड़ 50 लाख नागरिक, सॉरी किसान भाई हमारे इससे फायदा उठा चुके हैं। लेकिन जब हम देते हैं अपना ये, तो अगर हम अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं, वो भी हमको देना पड़ता है। साथ ही आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर, आजकल मोबाइल समझा जाता है कि सबके पास है, तो वो दिया जाता है। और आपके जो जमीन का जो खाता है या जो उसका जो डॉक्यूमेंट है, जो भी है वो आप दें। और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अनिवार्य है कि आप भारत के नागरिक हो। ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही है। ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿನ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿಕ ಈ ಒಂದು ನಿಧಿಯಿಂದ ಹಣ ಪಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ, ಅವನ ದಾಖಲೆನಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಜಮೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಕೃಷಿಕನ ಹತ್ರ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇರಬೇಕು, ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿರೋ ಪಾಣಿ ಪಟ್ಟೆ ಅದೇನೇನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂಧುಗಳೇ, ಅವನು ನಮ್ಮ ದೇಶದವನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. So as we were seeing the objectives and the details about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, so we are going to look at what is the eligibility criteria. So first, the criteria is he should have a land and he should be a landowner, right? Second thing is he should be, there will be a column called social classification, irrespective of whether he's a scheduled tribe or scheduled caste, both can also get, and other who are not there also they can. So anyone can apply. That's what we want to just say simplify way. The third is they should have an Aadhaar card, okay, because your Aadhaar card, your bank account number and your mobile number is linked to your account, and you can view all the information based on that, and also it will get registered with these details. And you should also provide is your land record details, that is your registration of your land, what has been registered, in whose name it is registered. So that is what is considered for the eligibility, right? And then the bank account should be a Jan Dhan bank account.
It's not like any other saving account or current account, but Jan Dhan account, if you have, that is what would get eligible for this scheme. And the most important is he should be an Indian resident, or he should be a citizen of India country, right? So this is what is the simple eligibility criteria for getting these schemes. And other documents required are land holding papers. Okay, that's what we just said now. Aadhaar card, Jan Dhan bank account details. So if you don't have the Jan Dhan account details, you have to create the bank account of Jan Dhan and prepare your landing paper, whatever is there, and then you can approach the bank. There is on the website which we'll be sharing you shortly, where you can go and register yourself. So over to Rajesh Raut. जी हाँ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए हमारे पास, अगर मैं किसान हूँ तो मेरे पास होना चाहिए मेरे जमीन के कागजात और मेरे नाम पे, और मेरा आधार कार्ड और जनधन बैंक अकाउंट डिटेल। 2014 से जब से ये नई सरकार आई है, और वो इसी बात पे ध्यान दे रही है कि सबके पास बैंक अकाउंट हो। क्यों हो? इसीलिए हो ताकि सीधा पैसा सरकार का उस जनधन बैंक अकाउंट में आए, किसी बीच में बिचौलिए के हाथ ना लगे। और उसी का ही फायदा उठाने के लिए आपको ये एक जनधन बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿನ ಕಾಗದಗಳಿರ್ಬೇಕು, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದೇನಲ್ಲೇ ನೀವು ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೂನ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಡುವಂತ ಅಕೌಂಟು. ಅದು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಬಾಂಧವರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಧನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರದು ಜಮೀನ್ ಇದೆಯೋ, ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯಾರ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾರಿಗಾನು ಅರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನ್ಧನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ pmkisan.gov.in ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು, ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. हाँ, इस योजना का लाभ उठाने के लिए हम दो तरीके से जा सकते हैं। एक है ये लिंक। अगर हम पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे किसान हमारे देश में पढ़े लिखे हैं, वो इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका सारा जो विवरण है वो यहाँ पे दीजिए, वो आपको एक के बाद एक गंतव्य स्थल तक पहुंचा देगा। अगर वैसा नहीं है, अगर आपके पास कंप्यूटर की शिक्षा नहीं है, आपके पास कंप्यूटर नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, सरकार आपको योजना से लाभान्वित करेगा ही करेगा। उसके लिए हमारे पास कॉमन सर्विस सेंटर है। पूरे देश में 6,50,000 गांव हैं, लेकिन पूरे देश में 3,50,000 कॉमन सर्विस सेंटर भी हैं। यानी कि हर 2 गांव में एक कॉमन सर्विस सेंटर आपको मिल ही जाएगा। तो आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। आप अपने गांव के आसपास, यानी कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी में आपको एक कॉमन सर्विस सेंटर मिलेगा। आप वहां पे भी जाके अपना आधार कार्ड, अपने जमीन के कागजात और जनधन बैंक अकाउंट दिखाएंगे तो भी आप इस योजना के तहत अपने को पंजीकरण कर सकते हैं। So how we need to enroll online is, there's a direct link given, that is https
pmkisan.gov.in. Now we are sharing the website here. You can see. So here you can directly register yourself. And I know because many of the farmers are already educated, so they can do it themselves or through their children's. Okay. Another way is if they can't register online, they can approach the CSC, that is Common Service Center, nearest to their village. They go and register there directly. There is a farmer community, means there is a farmer for CSC Common Farmers Service Center is there, which helps the farmers. Just they need to carry the documents to them. Now, if we go through the website, if you can see here, pmkisan.gov.in, they also talk about the scheme, about the exclusion. So we are going to share all those things so that it will be easy for you to go through. And then there will be also guidelines. Okay, what are the guidelines are there? The language, English, Hindi document is there so that it's easy for you to refer that. And then what is this Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana or scheme, what we call. So all the information is available here. You can see next to the scheme, next to the guideline. Okay, so there is optional guidelines, salient features, what are the, if you have any frequently asked question, all the informations are given on the website. And next, if you go to the contact us, you will find all the contact details on the top, on the top link itself. And then you also have a login for the farmers. Okay, so then also there is a login for CSC login. Okay, so Common Service Center, those who are specialized for farmers, they have the access for this login, where if they log in, they can fill the farmers information to register themselves. As we go a little below, if you see on the right hand side, there is a farmers corner, right? On the farmers corner, you can see if you click on farmer registration form, you can directly go and register yourself. Only thing is required is Aadhaar number, mobile number, and Jan Dhan bank account details. These are the three information immediately required to register. And then once you fill, then you need to upload your land document details and all to get the scheme available. Next, if you see the in case your Aadhaar authentication has failed, then you can edit and resubmit the information required. Below that, there is a beneficiary status, like what is your status, okay, whether you're eligible, not eligible, or how many installment you have received. So all those information would be here detailed, shared. And also the status of self-registered CSC farmers. That means the status of your registration, whether it's been approved or not. So all those information would be available here. Then when you go on the beneficiary list, here, this is one of the important link. Why I'm saying is because you can see who are the people have taken the benefits. All the names have been registered here. You want to just go select the state which you are. Say example, let me select Karnataka for our own state. Okay, then you go to a district, maybe Davangere or something like that. Davangere, Hassan, Haveri, whichever you pick. Yeah, Davangere. Next, we'll go to the sub district. Maybe same thing, Davangere we can take. Then we can go into the block. If required, so that even we can take Davangere or different, whichever you want to select. And then here we can take you can click on Annapura or anything. Yes, you can select this, no issue. Alur, Anna, okay, then get report. When you click on this, automatically all the names who have been signed up for this program or who are already getting benefited by this, already it has been listed here. So it is so beneficial to see that if so many people can get this scheme, Yojana for themselves, you can also get it. So that is what I want to say, nothing else. So here, this is all the information, but yeah, very brief, only name and male, female, just to show who is the head of the family. They want to showcase here, or who is getting the beneficial. So it has been already captured in the portal. Now, when we come down a little bit, you can also see they can update the self-registered farmer. Like say example, if you want to change your mobile number, any information you want to update, you can log in and edit that. So that is also possible for you. Then also there is a download mobile app. You can download. In the mobile app, you can see the status of your scheme. You can see the installment, what you have received. All those, it's made so simplified for you just log in on the mobile app and you can get all the information. And next comes is download your KCC form, that is Kisan credit card form. This is also in case if you want to apply for a loan using this, okay, you are already getting a benefit of 6,000 rupees per month as income. And then you want to take more loan through this. So even this portal is giving you the access directly, that where you can download the form,
fill the form and go to the bank, nearest bank, and apply for our CSC center. They can guide you over this. And then there is also a FAQ, frequently asked questions, anything related to the scheme, all the information has been captured here. And then also help desk, in case if you still need a support, there is a help desk there. And if you see on, there is a map given on the center of the page where all the states details are being mentioned. If you see about especially Karnataka, there are 55,88,348 people has been benefited by this scheme. And how many people have got the means 95% payout has been done. That means 52,91,108 people have already got this benefit. So there are more farmers are there who can still register. You can just approach them and provide this information. Let this knowledge get shared with a lot of people and that get benefited. So here all the information state-wise has been done, all the details. Even if you see on the left-hand side of the website, you have all those like August to November or April to July, December to March. That is the period. That is every 4 months. That is the 3 parts, right? What we are talking about, that 6,000 get in 3 equal installment. That means every 4 months they get paid. So all this information has been mentioned, and there are 11.35 crore people got benefited out of this. Okay, so over to Rajesh. कुशाल जी ने तो अंग्रेजी में सब समझा ही दिया है, मैं वही चीज अभी हिंदी में दोहराता हूँ। ये है वो वेबसाइट जिसमें आपको ये करना है PMKISSAN.gov.in टाइप करना है और एंटर दबाना है। फिर आपको ये खुल जाएगा। आप देखेंगे मोदी जी, येदियुरप्पा जी सब हाथ हिलाते हुए, और फिर आप अपने मुद्दे पे आइए। इसमें सब कुछ डिटेल है। अगर आप देखेंगे अबाउट अस, ये करते क्या है, कौन कौन है, आपको हिंदी में सहूलियत है तो हिंदी में, अंग्रेजी में सहूलियत है तो अंग्रेजी में। दुख की बात है केवल 2 भाषाओं में है, कन्नड़ा में नहीं है कि उड़िया में नहीं है, बंगाली में नहीं है, लेकिन 2 भाषाओं में है। आप अगर नहीं जानते, किसी की मदद ले सकते हैं। गाइडलाइंस भी वो बता रहे हैं कि इस कार्यक्रम का क्या गाइडलाइन है, इसके अलावा क्या क्या गाइडलाइन है, इससे पहले कैसा कार्यक्रम था, क्योंकि कुछ बदलाव आए हैं। अगर समय मिला तो मैं उस बदलाव के बारे में बताऊंगा, और फिर ये योजना में क्या क्या सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, और ज्यादातर लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या प्रश्न पूछते हैं, क्या मेरा प्रश्न भी वही है, आप इसको देख सकते हैं, शायद आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। और कुछ भी नहीं मिले तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं फोन के द्वारा भी। इनका फोन नंबर है 8 घंटे, मैं समझता हूँ 24 घंटे नहीं तो कम से कम 8 घंटे लोग हैं जो कि आपके फोन का इंतजार करते हैं, आपको वो सहायता करते हैं फोन के ऊपर। और अगर आप इसमें अपना खुद का यूजर आईडी और लॉगिन कर सकते हैं, आप अपना जब भी देखना चाहें, कब मेरा पैसा आया है, कब आएगा, कितना आ चुका है, सब विवरण यहाँ पे है। और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि 3,50,000 हमारे पास CSC हैं पूरे देश में, तो आप किस CSC से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे देखिए फार्मर, किसानों का एक अलग सा अड्डा ये माना जाए। तो अगर आप नए किसान हैं, आपने इसका फायदा नहीं उठाया है, आप इसका फायदा उठाएं, इसमें अपने आप का पंजीकरण करें। और मान लीजिए आपका अभी तक आधार कार्ड ठीक से बना नहीं है, कुछ गड़बड़ी है, नाम का, पते का, उम्र का, पिता के नाम का, वो संशोधन भी यहाँ पे कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने कितना फायदा अभी तक उठाया है, नहीं उठाया है, कब पैसा आने वाला है, और जो CSC में मेरा कहाँ तक बात गया है, मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और ये जो बेनिफिशियरी लिस्ट बता रहे थे, दावणगेरे का इन्होंने उदाहरण लिया, और उसमें आप देखेंगे कि बहुत तरह के नाम आए थे, कई दूसरे जाति के, जनजाति के भी नाम आए थे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पे मोदी जी नजर आ रहे हैं, येदियुरप्पा जी नजर आ रहे हैं, तो खाली बीजेपी के ही फॉलोअर होंगे, ऐसा नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टी से उठ के हर उस नागरिक के लिए है जो भारत का है, उनके लिए है ये। तो ये कभी ना इसको समझें कि ये किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल का ये उद्देश्य है, नहीं। ये उससे ऊपर उठ के है। समग्र भारतवासी इसके अंदर संपृक्त हैं और उनको सबको फायदा मिलेगा। जैसे हमने हमारे वक्ता में बताया था कि कोई भी भारत का नागरिक हो, अगर आप स्क्रॉल करें चंद्रशेखर जी, तो आपके नाम से पता चल सकता है कि हमारे पास कैसे हैं। जैसे अली बाबा साहब हैं, अमीर साहब हैं, अंगती येरप्पा साहब हैं। ये अल्फाबेटिकली है, क्रम अनुसार लिखा गया है, A से लेकर Z तक है। तो इसमें किसी के जाति, किसी के धर्म कुछ नहीं, आपको खाली किसान होना है। कुछ चीजें जो हमने इसमें नहीं ये किया, अगर मान लीजिए आप टैक्स देते हैं साल दर साल,
तो शायद आप इस स्कीम में ना आ सकें। अगर आप ऑलरेडी जमींदार हैं तो आप इस स्कीम में ना आ सकें। अगर आप बहुत ही वंचित गरीब किसान हैं तो ही आप इसमें फायदा उठा सकते हैं। सरकार आपकी तरफ देख रही है। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप अपने बारे में भी ज्यादा लिख सकते हैं, अपना नाम पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल ऐप में भी ये कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक ये सम्मान निधि है और उसी आधार पर आप लोन भी ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इसके बारे में मैं एक छोटा सा शब्द बताऊंगा। वो ये है कि मान लीजिए आपको धनराशि की जरूरत पड़ी, जरूरी नहीं है कि वो आपके खेत खलियान के लिए जरूरत पड़े। मान लीजिए आपकी बेटी बहन की शादी भी हो तो भी आप 3 लाख रुपए तक की राशि इस क्रेडिट कार्ड से ले सकते हैं। उसमें आपको 4% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 3 लाख रुपया 4%। किसी भी दुनिया में कोई भी बैंक 4% का इंटरेस्ट नहीं देता है। अगर आप किसान हैं, वंचित किसान हैं, तो ये है। और जैसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन, जो साधारण लोग जिसके मन में वो भ्रम रहता है क्या होता है क्या होता है, इसमें वैसे सारे प्रश्नों के प्रश्न भी होंगे, उत्तर भी होंगे, वो आपको मिल सकते हैं। तो आप उसको खत्म करें, पढ़ लें, फिर जानें। अगर तब भी आपको प्रश्न के उत्तर नहीं मिलते हैं तो फिर आप इनके सहायता केंद्र में फोन करें। और जैसा कि यहाँ पे नंबर में भी दिखाया जाता है, क्योंकि नंबर सच बोलता है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता। हम जो ये नंबर यहाँ पे ये तो हम क्या बोल रहे हैं, वेबसाइट बोल रहा है। अगर किसी को कोई संशय या संदेह है, वो इसको चैलेंज कर सकता है कि ये क्या गलत दिया है। नहीं, वो नंबर है, ये डंके की चोट पे सरकार बोल रही है कि हमने ये किया है और ये हमने यहाँ दिखा रहे हैं। आप देखिए 52 लाख लोग इसमें प्रभावित हुए हैं। पूरे देश में अगर हम देख रहे हैं 11 करोड़ 35 लाख इसमें लोग लाभान्वित हुए हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वो अमीर ज्यादा नहीं है, ये वो हैं जिनके पास ये 6,000 रुपया भी सालाना नहीं आता था, अब आने लगा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, 6 बार ये पेमेंट आ चुका है 2-2 हजार का, यानी कि 12,000 आ चुका है, 7वां आने वाला है और ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट में जाएं, इनसे संपर्क करें। वरना हमको लगता है प्राय हमने सब बोल ही दिया है। अब कन्नड़ में बात करने के लिए मैं चंद्रशेखर जी से अनुरोध करूंगा। चंद्रशेखर जी। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ pmkisan.gov.in pmkisan.gov.in ಅಂತ ಹೊಡೆದು ನಾವು ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಪೇಜ್ ನಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಅಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ತಗೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈ ನಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಗ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಂಧುರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ, ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅವರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ 3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಾನು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ದೊರಕಿದೆ, ಹಣದ ಸಹಾಯ ದೊರಕಿದೆ
ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಸಾಕ್ಷಿ. 11.35 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಕೋಟಿ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ತಿರೋದು ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ 96% ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನಲ್ಲಿ 97% ಜನಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ರೈತ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ತಲುಪಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 95% ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ, ರೈತರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬಡ ರೈತ ಬಾಂಧವಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಸಹಾಯ ಸಿಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತಾನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬರಿಬೋದು. ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಹೊಸ ಕೃಷಿಕ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಟನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಧಾರ್ ನಂಬರ್ನ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹಣಕಾಸು ಬರತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ, ನಾನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಸಿಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹಿಸೋದು, ನಾವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಜನಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗ, ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲೆ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು 10 ಪೇಜ್ನಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷದ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆದಷ್ಟು ನಮಗ್ ತಿಳಿದಿರುವಂತ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತ ರೈತ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ರೆ, ಇದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. 2022ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಏನು ಇವಾಗ ಆಮದನಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಏನು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ. ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೀಟನಾಶಕ, ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೀಜ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ದು ಹಳೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಜಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಟನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ
ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿಬಹುದು, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕರಿಬಹುದು. ನಾನೀಗ ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುಂಬಾ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ತೀರಾ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕೃಷಿ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಹಣದ ಈ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜಮೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ MP ಗಳು, MLAಗಳು ಅಥವಾ MLCಗಳು ಮತ್ತೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್, ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ಇವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಈ ಸವಲತ್ತು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋಂತ ಕೇಂದ್ರದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಲಾಗೂ ಆಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೋ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಪೆನ್ಷನಿ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದೇ ಹುದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯಾರ್ಯಾರು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬೇರೆ ಆದಾಯದಿಂದ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಅರ್ಹರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಇಂಜಿನಿಯರು, ಲಾಯರ್ಸು, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸು, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯ ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಕಡು ಬಡವ ರೈತನಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಸೇರಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವನು ತನ್ನ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನ ಆದಾಯ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೇ ಈ ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. जी हाँ, अभी हम जानेंगे कौन कौन इस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। अभी तक तो हमने जाना कि वो गरीब किसान, वो वंचित किसान जो ज्यादा फायदा कहीं और से नहीं पाते हैं, कम से कम सरकार उनकी तरफ देख रही है और उनको सालाना 6,000 रुपए 3 इक्वल किस्तों में बांट रही है। लेकिन अभी हम जानेंगे इसके अंदर कौन नहीं आता है। संगठित लैंड होल्डर्स, यानी कि जैसे मान लीजिए बैंगलोर की बात करते हैं, बैंगलोर में HAL है, BEL है, इनके पास 100 करोड़ के जमीन है, ये 6,000 रुपए के लिए नहीं जाएंगे सरकार के पास, ये उस श्रेणी में नहीं आएंगे। और वो लोग भी नहीं आएंगे जो कोई पदवी में है, जैसे कि मान लीजिए कोई मंत्री हैं, कोई MLA हैं, कोई MP है, ये उसमें नहीं आएंगे, आना भी नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। और अगर कोई रिटायर्ड ऑफिसर, चाहे राज्य के हों या सरकार, केंद्र सरकार के ऑफिसर रहे हों, उन्होंने 20 साल 30 साल काम किया हो, या किसी बड़े ओहदे में सरकार से रिलेटेड हो, वो भी इस के अंतर्गत नहीं आएंगे। और जो जिनकी भी पेंशन 10,000 रुपए से ज्यादा हो या 10,000 रुपए या उससे ज्यादा हो, वो भी इस श्रेणी में नहीं आएंगे। और वो लोग भी नहीं आएंगे जिन्होंने पिछले साल अपना इनकम टैक्स दिया हो। और जैसे कि प्रोफेशनल्स, डॉक्टर हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए, इंजीनियर हुए, वकील भाई लोग हुए, आर्किटेक्ट हुए, और आप समझ सकते हैं जो ऐसे पदों में हैं, ओहदों में हैं, जिनका अच्छा आय है,
वो अपना गुजारा आराम से कर सकते हैं, वो इस श्रेणी में नहीं आएंगे। तो इनके अलावा जो रहे और जो वंचित हैं, जिनके पास बहुत कम जमीन है, भले ही वो जमीन के मालिक हैं लेकिन बहुत कम है, उनको जरूरत भी है और वो इस सम्मान के योग्य भी हैं। धन्यवाद। कुशाल जी, अंग्रेजी में। Thank you. So as we have seen the benefits of PM Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, and also we have seen how to register and what are the benefit, eligibility, everything. But also let's look at what is the exclusion categories. So those who are institutional landholders, that means as an organization or as like a cooperative society or like any particular group, if they have taken us this one, they are not eligible. Okay. Second thing is farmer families in which one or more of its member belong to following categories. That is, if they are like former or present holders of constitutional posts, if they are former and present minister, state minister, former present ministers of parliament, state legislative assemblies, state legislative councils, former and present mayors of municipal corporation, former and present chairpersons of district panchayats. So this all are now excluded from this category. They are not eligible for this. Another is all serving are retired officers and employees of central state government ministries, officers or department and its field units, central or state, okay, and attached to officers like autonomous institutions on the government as well, and regular employees of the local bodies, but excluding multitasking staff like class 4 or group D employees. So other than that, others are all not eligible. Right, and also there are all superannuated or retired pensioners whose monthly pension is 10,000 or more. Okay, except those like multitasking staff, that is class 4 or group D employees, are above categories are not eligible for this scheme. But if they are below 10,000 of pension, then they are eligible. And if they are class 4 or group D employees, then they are eligible. So now also the people who have already filed the income tax or assessment for assessment year last year, so they are also not eligible because of the, maybe they would have shown the different income source or maybe of the same agriculture source. But if their income, they already filed the income tax for the assessment, they would not be considered for this. And also professionals like lawyers, doctors, engineers, chartered accountant, architects, and various other registered from the professional bodies or who are also carrying out the profession by undertaking practices, they also would not be eligible for this kind of schemes. They'll be excluded from this category. So this is, we just want to brief about this. So those who are watching this Facebook Live, I want you to share this with as many people as more farmers, and also that they can get more benefit by looking at these schemes. And next, let me thank our National President, Kushesh Arya ji, National President. And then we have Sri Shashank Chopra ji, who is National Organizing Secretary from PMJKY PPA India National. Then we have Sri Praveen Bansal ji, National General Secretary. And also we have Sri Rajmani ji, who is our National Trainer of PMJKY PPA India. And we have Sri Binod Jha, who is National General Secretary of PMJKY PPA India. Then we have Shailendra Vagre ji, who is National Media Head. And then Sri Vishal Negi ji, who is National IT Cell Head. And then Prashant Devan ji, National IT Cell Head. So we want to thank the national team for giving the opportunity to make this Facebook Live on PMJKY PPA national page. And we also want to thank our state team, Srimati Amita Rani Pandey ji, the state president of Karnataka, PMJKY PPA Karnataka. And then we have Dinesh Hardik Patel, Organizing Secretary, PMJKY PPA Karnataka. Then we have General Secretary Bharat Kumar Jain and Chitra Sanji from PMJKY PPA Karnataka. And then Lalit Dakliya ji, who is IT Cell Head of PMJKY PPA Karnataka. Then we have Shashi Deshpande, who is Media Head and spokesperson for PMJKY PPA Karnataka. And I also want to thank my colleague here who have given all the knowledge, who has done all the research and sharing all this information to you. So our Chandrasekhar, who is our associate trainer with PMJKY PPA Karnataka, and Rajesh Rautji, who is associate trainer at PMJKY PPA Karnataka. So I want to thank for joining us. And also I want to thank every one of you who have been part of this Facebook Live today. And if you're seeing even after Facebook Live, I would like you to share this Facebook Live wherever you are seeing. Share this link or tag your friends, share in different groups,
are the community of farmer. Let this reach more information. So you are the ambassador for this, of sharing this information and making the difference in the farmer's life. So we want you to share this information to each and every farmers. So I want to thank you for being part of it, and we look forward for more meeting you again next week, next Friday, with the new scheme. With more details would be shared on the Facebook page as well. So looking forward to seeing you again. So I want to thank Chandrasekhar ji and Rajesh ji. So I'll invite them to say one line before I end the session. So yes, over to Rajesh Raut. धन्यवाद कुशाल जी। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, अपना हमारे जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कि जरूरी नहीं कि हमारे वो श्रोता होंगे जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, शायद उनके पास मोबाइल ना हो, शायद उनके पास लैपटॉप ना हो, शायद उनके पास समय ना हो, लेकिन जो भी देख रहे हैं उनके पास ये शायद सब कुछ हो। और अगर उनके पास और एक चीज हो जाए, नियत, किसी को सहायता करने की, अगर वो ये नियत जिसको सहायता ये एक्चुअली पहुंचा जा सकता है, वो जो हाशिए पे हैं, जो मार्जिनाइज्ड हैं, जो वंचित हैं, उन तक अगर पहुंचा दिया जाए कि देखिए भाई एक ऐसा प्रोग्राम है। हमने इससे पहले मानधन योजना के बारे में बताया था, मनरेगा के बारे में बताया था, आज किसान सम्मान योजना के बारे में बता रहे हैं। अगर वहां तक ये आवाज पहुंच जाती है, कुछ नहीं तो ये लिंक ही भेज दीजिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं, आप खाली संदेश आते हैं वाला काम करवा दीजिए। कसम से भगवान आपका भला करेगा। आपको मालूम नहीं कहां से और संदेश आएंगे जो आपका पदोन्नति, आपकी उन्नति, आपके आर्थिक, आपके मानसिक हर तरह से उन्नति करेगा। अगर आप एक छोटा सा काम कर दें, ये मैसेज उन तक पहुंचा दे जिन तक ये जाना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಜಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗುರುತುಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಬೇಕಾಗಿರೋರು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ತಗೋಣ. ಈ ಯೋಜನೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆದು ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡೋಣ. ಅದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಪ್ರಸಾರ ಅಭಿಯಾನದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಹಾಯ, ನೆರವು ಮತ್ತೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರಿವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಪಡಿಸೋಕೆ ಏನೇನ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, Chandrasekhar ji. So now we have with us Amita Rani Pandey ji, our state president of Karnataka. So let me invite to share little couple of words from her. Amita ji, आप अनम्यूट करिए. अनम्यूट. कुशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, रावत जी को, राजेश रावत जी को, चंद्रशेखर जी को। आपने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं सारे दर्शकों से रावत जी की बात को फिर से दोहराना चाहती हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि ये अकेले आपके लिए नहीं, आपको तो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो लोग दर्शक हैं, ये लोग आप लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये समाज तक बातें पहुंचानी है। अभी कोरोना के समय में हम लोग जन जन तक नहीं पहुंच सक रहे हैं, इसलिए हमने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को माध्यम बनाया है। और ये माध्यम को आप लोगों को, इस माध्यम से आप लोगों को ट्रेन किया है कि आप अपने सराउंडिंग में लोगों तक पहुंचाएं। जिस तरह कोरोना चेन से हम लोगों को तबाह किया है, और हमारा नॉलेज इसी तरह चेन की तरफ से बढ़ करके लोगों को आबाद कर देगा। तो ये कई लोगों को ऐसा है, जैसे आप सबने सुना कि ये कितना सरल और कितना स्पेसिफिक उन लोगों तक है कि जिनके पास कोई मदद करने के लिए नहीं आता है। ये सारे लोग समझते हैं कि ये सभी किसानों को सब चीज बड़े लोगों के लिए है, एक्चुअल बेनिफिशियरी के लिए कोई नहीं है। तो हम ये बहुत ही
बुलंदी से कहना चाहते हैं कि हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी स्कीम बनाया है ये जरूरतमंदों के लिए बनाया है। बस इसका संदेश उन जरूरतमंदों तक पहुंच जाए, इसके लिए ये हमने एक छोटी सी पहल की हुई है। कुशाल जी, चंद्रशेखर जी और रावत जी, राजेश जी के तीनों की पहल से हम लोग सभी आपके साथ हैं और हर शुक्रवार को हम लोग आपके साथ आते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कहते हैं, उन्हीं की मन की बात को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं की दिशा में हम अग्रसर हो रहे हैं। लोगों तक, जन जन तक पहुंचने का प्रयास है। आप सभी से फिर से विनती है कि आप इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। ये लाइव लिंक जो अटेंड नहीं कर पाए हैं, ये लिंक को आप अपने सोशल मीडिया में जितना ज्यादा डाल सकते हैं उतना डालें। आप सबों का बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला सुनने के लिए, उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाया उनका भी धन्यवाद। और मैं पुशेश जी और सारे अपने नेशनल टीम का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो लोगों ने हमें ये मंच दिया कि ये सारा जो मैं कर्नाटका में ही कर रही थी ये कार्यक्रम को पूरे देश भर का मंच मिला है। आप सबों को तहे दिल से फिर से धन्यवाद। शुभ रात्रि। Thank you. Dhanyavad. So thank you. Good night, everyone. See you next week with new scheme, with new information. So until then, keep sharing and seeing you next week.